Om Jnanandasya Gyananjana Salakaya Chaksurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavanishware Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarupyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So welcome to the Srimad Bhagavatam class. Before we begin today, I would like to remark today's Srila Prabhupada's Tiruvav, most auspicious occasion. So we're seeking the blessings of Srila Prabhupada. Prabhuji, can we translate in Hindi? Hare Krishna. Ram Prabhuji. Go ahead. थैंक यू। आप सबका स्वागत है आज के इस नित्यम भागवत सेवा में। तो आज बड़ा दिवस है जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है, तो आज हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। I would also like to invoke the blessings of my dear friend, His Grace Rajendranandana Prabhu. Some of you may know him from Mayapur. He is a very dear disciple of Srila Prabhupada. And I just got a message from his wife that he may be leaving this world any moment. He's preparing to transit to another realm. और मैं मेरे प्रिय मित्र का आशीर्वाद भी लेना चाहूंगा, जिनका नाम है हिज ग्रेस राजेंद्र नंदन प्रभु। वो मायापुर में है, श्रील प्रभुपाद के शिष्य है, और वो भी तैयार, उनकी धर्मपत्नी का मुझे अभी फोन आया था कि वो अभी तैयारी कर रहे हैं ये भौतिक धरातल छोड़ के भगवान के धाम जाने का। Prabhu is very well known for his heartfelt classes and for his attachment to the Dham, where he will be a regular speaker during the Navadvip Mandal Parikrama. और प्रभु बड़े जानकार हैं मायापुर धाम के बारे में, और अलग-अलग जगहों के बारे में वो बताते हैं मायापुर धाम के बारे में। So we can chant Hare Krishna mantra for his auspicious passing together. You can keep your mics muted, but you can chant from home. We can chant 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 41, Text 24, chapter entitled Krishna and Balaram enter Mathura. Text 24. Tam sampravisto Vasudevanandano
vrittau vayasyai naradeva vartmana drashtum samiyus tvarita purastriyo harmyani chaivaruruhur nipotsukam. Okay, I can't read Hindi, so I need to have the, shall I get my own Bhagavatam then? Because I can read that. I thought you Someone will read in Hindi for audio because you know. Okay. हरे कृष्ण। ताम शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा ताम उस मथुरा में तम प्रविष्टो घुसकर। Do you want the word to word meaning, Radhika Nagar Prabhu? No, Only no, no, translation? no. We have many verses today. Yeah, only translation. Bhavananand Prabhu. ओके प्रभु जी। भावार्थ श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा मथुरा की स्त्रियां जल्दी जल्दी एकत्र हुई और ज्यों ही वासुदेव के दोनों पुत्र अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए, वे उन्हें देखने निकल आई। हे राजन, कुछ स्त्रियां उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों के छतों पर चढ़ गई। I'm reading the translation in English. The women of Mathura hurriedly assembled and went forth to see the two sons of Vasudeva as they entered the city on the king's road, surrounded by their cowherd boyfriends. Some of the women, my dear king, eagerly climbed to the roofs of their houses to see them. Text 25. Kaschid viparya dritavastra bhushana Vismritya chaikan yugaleshwata para Kritaika patra shabanaika nupura Nangtva dvitiyan tvaparaschalochanam. Some of the ladies put their cloth and ornaments on backwards. Others forgot one of their earrings or ankle bells, and others applied makeup to one eye but not to the other. भावार्थ श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र तथा गहने उल्टे पहन लिए, कुछ अपना एक कुंडल या पायल पहनना भूल गई और अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया, दूसरे में लगा ही न पाई। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Yeah. The ladies were very eager to see Krishna, and in their haste and excitement, they forgot themselves. Text 26. So just imagine Krishna and Balaram and entering Vrindavan, Mathura, and this is what is taking place. It's a very, very beautiful scene. Text 26. Ashnantyakastat apasyat sotsava avya yamana akritopamachyana swapantyautaya nishamya nishwanam prapayayantyorvam apohyamataram. Translation. Those who were taking their meals abandoned them. Others went out without finishing their bath or massages. Women who were sleeping at once rose from their bed when they heard the commotion, and mothers breastfeeding their infants simply put them aside. Prabhuji, can I read 25 purport translation if you don't mind? Oh yeah, sorry. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा शिष्यों के द्वारा स्त्रियां कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और वे हड़बड़ी तथा उत्तेजनावश अपने आप को भूल गई। 26 का भावार्थ श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा जो भोजन कर रही थी उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। अन्य स्त्रियां अदनाहिया या उपटान पूरी तरह लगाए बिना ही चली आई। जो स्त्रियां सो रही थी वे शोर सुनकर तुरंत उठ गई और माताओं ने दूध पीते बच्चों को अपनी गोदी से उतारकर अलग रख दिया। Text 27. Mamam sitasam aravindalochana pragalvalila hasitavalokahi yaharamata dviradenda vikramo drisham dadashri ramanatmanotsavam.
Translation. The lotus-eyed Lord, smiling as he recalled his bold pastimes, captivated those ladies' minds with his glances. He walked with the gait of a lordly elephant in rut, creating a festival for their eyes with his transcendental body, which is the source of pleasure for the divine goddess of fortune. भावार्थ श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा अपनी साहसिक लीलाओं के स्मरण करके मुस्कुराते हुए कमल नेत्रों वाले भगवान ने अपनी चितवानों से स्त्रियों को मनों को मोह लिया। वे शाही हाथी की तरह मत वाली चाल से अपने दिव्य शरीर से उन स्त्रियों के नेत्रों के लिए उत्सव उत्पन्न करते हुए चल रहे थे। उनका यह शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी के लिए आनंद का स्रोत है। Swamuhushutam anudruttachetasastam tatprekshanosmita sudokshana labdamanaha anandamurting upaguhya drishatma labdam rishyatvacho yahuranantamarindamadim. I'll start again because the first I got the wrong melody. Dristva muhushutam anudruttachetasastam Tat prekshanotsmita sudokshana laptamana Ananda murting upaguhya drishatma labdam Rishyatvacho yahuranantamarindamadim. The ladies of Mathura had repeatedly heard about Krishna, and thus as soon as they saw him, their hearts melted. They felt honored that he was sprinkling upon them the nectar of his glances and broad smiles. Taking him into their hearts through their eyes, they embraced him, the embodiment of all ecstasy. And as their bodily hairs stood on end, O subduer of enemies, they forgot the unlimited distress caused by his absence. भावार्थ श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित हो उठे। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थी कि कृष्ण के उन पर अपनी चितवान तथा हसी रूप अमृत का छिड़काव किया है। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करके उन सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया। और हे अरंदिम, ज्यों ही उन्हें रोमांच हो आया, वे उनकी अनुपस्थिति से जन्य असीम कष्ट को भूल गई। 29. Prasada sikararuda prityutpula mukhambuja avyavarsham somanasyahi pramada balakeshavam. The lotus face is blooming with affection. The ladies who had climbed to the roofs of the mansions rained down showers of flowers upon Lord Balaram and Lord Krishna. भावार्थ श्रील प्रभुपाद के शिष्य द्वारा स्नेह से प्रफुल्लित कमल सदृश मुखों वाली स्त्रियों ने जो अपने महलों के छतों पर चढ़ी हुई थी, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। 30. Dadyakshatai sodapatrai shrakandar avyupayanai tab anarchu pramuditas tatra duyatayam. Brahmanas standing along the way honored the two lords with presentations of yogurt and broken barley corns, pots full of water, garlands, fragrant substances such as sandalwood paste, and other items of worship. भावार्थ श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा रास्ते के किनारे खड़े ब्राह्मणों ने दही, अक्षत, जौ, जल भरे कलशों, फूलों, मालाओं, सुगंधित द्रव्यों तथा चंदन के लेप तथा पूजा की अन्य वस्तुओं की भेंटों से दोनों भाइयों का सम्मान किया। Text 31, which I believe is the last one today, if I'm correct. Uchu paura aho gopyas tapakim acharam mahat yahi etap anupashyanti nara loka mahotsabao.
The women और of Mathura exclaim, "Oh, what severe austerities the gopis must have performed to be able to regularly see Krishna and Balaram, who are the greatest source of pleasure for all mankind." प्रभुपाद के शिष्य द्वारा मथुरा की स्त्रियां चिल्ला पड़ी, आहा, समस्त मानव जाति को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण तथा बलराम को निरंतर देखते रहने के लिए गोपियों ने कौन सो कठोर तपस्या की होगी। Hare Krishna. So there is no purport for this verse. I remember hearing that the etiquette is that one should not speak on a verse or comment on a verse where the previous acharyas have not commented. But I understand that it's so many verses and so many things can be said for each one of them, and you have to kind of divide the class in such a way. So we stop here on text 31. And the scene that is being described in these verses is very, very enchanting. Krishna and Balaram are entering Mathura, and the residents of Mathura, they have heard of them, and they were very much attracted by them and by their beauty. And the thing is that when as they are walking through the city and people, the residents of Mathura are hearing about it, they're running to the roofs, and like it says, they're dropping everything they're doing. They're dropping, if they're taking a bath, they're coming out of the bath. If they're like receiving a massage, stopping the massage, breastfeeding, the children are put on the floor. I even heard that if women were getting married, they will stop the marriage ceremony and they will just come out to see the Lord. They're so beautiful. And this is, in one sense, is similar to the residents of Vrindavan. When the gopis went running to see the Lord, they also kind of didn't dress themselves properly, didn't put the makeup. Their attraction for the Lord was so strong. And, it is described that the attraction of these pure devotees is such like is unstoppable. Just like the river flows to the sea. And, translation. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये जो अभी श्लोक बताए गए इनका तात्पर्य नहीं है, तो जो आचार्य की शिक्षा है कि जिसमें तात्पर्य नहीं हो उसमें हम लोग चर्चा नहीं करनी चाहिए, परंतु यहाँ पे बहुत सारे श्लोक बताए गए हैं, तो वो श्लोकों के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो जो दृष्टांत बताया गया है इन श्लोकों में, इसमें कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, और वो जो स्त्रियां और जो मथुरावासी कृष्णा के बारे में सुनते ही वो भागते हुए आ रहे हैं। कोई माताएं जो स्तनपान करा रही हैं वो आधे में छोड़ के स्तनपान से आ रहे हैं। कोई जो सुना जाता है जो लड़कियां शादी कर रही हैं वो शादी छोड़ के कृष्ण बलराम को देखने आ रहे हैं, और अलग अलग तरीके से जो व्यक्ति हैं वो सब आधे में काम छोड़ भगवान के दर्शन के लिए मात्र के लिए भाग रहे हैं और देखने के लिए। तो ये जो दृष्टांत है ये उसी प्रकार से है जैसे कि वृक्ष लीला में जो गोपियों ने कृष्णा के प्रति दिखाई थी, और ये जो आकर्षण है वो इतना ज्यादा है कि वो कभी रोका नहीं जा सकता है। इतना जबरदस्त ये उनका भगवान के प्रति जो आकर्षण है, तो अभी हम आगे और समझेंगे। Prabhuji, over to you. So this is described like Tivrena Bhakti. The attraction is so strong, just like the river flows to the sea, and it flows with such force that it can actually move big rocks and nothing can stop it. So similarly, the attraction of the residents of Vrindavan and the residents of Mathura was so strong that nothing could stop them. They were drawn directly, spontaneously to the Lord. तो ये जो दृष्टांत है और जो उनकी भक्ति है, इसको तीव्र भक्ति कही गई है। ये एक उस नदी के भांति है कि जिसका जो बहाव है वो इतना जोर से है कि वो रोकते हुए भी कभी नहीं रुक सकता है। ऐसा उनका आकर्षण था भगवान के प्रति, और यही त्रिविध भक्ति कही जाती है।
And it's described that because the ladies were so happy to see the Lord, they were shining, they were so, when someone is happy, when someone is, in good consciousness, they shine and they become very, very attractive. So they were shining, they were so beautiful, running to see the Lord. और ये बताया गया है कि जो स्त्रियां थी वो इतनी खुश थी, वो चमक रही थी। और ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति जो खुश होता है वो एक चमक की तरह होता है, उसके अंदर से कुछ अलग से चमक आने शुरू हो जाती है। And the Lord was reciprocating with them with with broad smiles and glances, beautiful glances upon them. और जो भगवान है वो इनके आदान प्रदान से वो इनके जो स्वभाव को आदान प्रदान कर रहे थे, अपनी हंसी से एकदम और अपने दृश्य से और उनसे आदान प्रदान कर रहे थे। So this is first point that comes that the residents of Vrindavan, through hearing about Krishna, they had become, the residents of Mathura, they have become so eager to see the Lord. The Lord actually came to Mathura to give them darshan. तो ऐसा बताया गया एक बात कि जो ये दृष्टांत है वो इस प्रकार से है कि जो मथुरा वासी है वो भगवान को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। And it is explained that when we're talking about having the darshan of the Lord, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he will emphasize that it's not that we go to see the Lord, but we want so that the Lord can see us. तो ये ऐसा है कि भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी बताते हैं कि समझाते हैं कि हम लोग को भगवान को देखने के लिए नहीं, भगवान हमको देख रहे हैं। And to the degree of the purity of our love and our eagerness to see the Lord manifests himself in our lives. और जितनी स्तर तक हम इच्छा प्रकट करेंगे भगवान को देखने की, उतना भगवान हमारे तरफ वो अपने आप को दर्शाएंगे। Kamsa, we're going to see later in the chapter, Kamsa or the cloth merchant, they could not appreciate Krishna because they didn't have a heart full of devotion. कंसा और जो कपड़े का जो व्यापारी था वो इतना कृष्णा को पसंद नहीं कर रहे थे, तो इससे क्योंकि उनके हृदय में प्रेमा भक्ति नहीं थी। But for the resident, all the other residents, they were so enlightened, and so the mood was such a festive mood. और दूसरे जो मथुरा वासी थे वो बहुत खुश थे और उनके अंदर कुछ प्रकाशमय था और वो एक उत्सव के भाव में थे। And this is what creates the spiritual, the spiritual atmosphere. What that's that eagerness to see the Lord, that happiness to see the Lord. It becomes the energy becomes very, very enlightening, very enlivening. और ये जो है एक ऐसी परिस्थिति, आध्यात्मिक स्थिति बना देता है कि जो उसको एक अच्छे उत्सव और प्रकाशमय जैसा हो जाता है। And we want to be in that spiritual atmosphere. That's what we are hankering for the most. That's the ultimate desire, prayoyana, objective for the soul, is to enter into that transcendental, consciousness. तो ये जो परिस्थिति थी वो इस प्रकार थी जैसे कि आध्यात्मिक परिस्थिति, और इसमें ही हमको जाना है क्योंकि इसमें हम आनंदमय रहते हैं और इसमें हम बहुत प्रकाशवान जैसे एनलाइटनमेंट होते हैं, प्रकाशवान जैसे रहते हैं। Which is an atmosphere which is imbued with the selfless love of the devotees for the Lord.
और ये एक ऐसा निस्वार्थ सेवा है भगवान के लिए and the love of the Lord for his devotees. और ये भगवान का प्रेम है भक्तों के लिए. So this is the atmosphere in which they're entering. I just tell you a quick story is coming to my mind. तो ये जो परिस्थिति है ये हम लोग हैं उसमें हम अभी घुसेंगे. अभी ये हम समझने का प्रयत्न करेंगे. Some years ago, I was in Kusun Sarovara. The pandas there are my friends. कुछ वर्ष पूर्व मैं कुसुम सरोवर पे था और कुछ पंडे मेरे मित्र हैं. Sri Sri Radhavana Vihariji temple. So they told me they had been amongst the pandas there. They invite themselves each other for different occasions. तो जो ये पंडे हैं वो श्री श्री राधा बन बिहारी के थे और ऐसे कुछ उत्सव होते हैं तो उस उत्सव में वो कुछ लोगों को आमंत्रित करते हैं. So the day after was Advaita Acharya's appearance day, and there is a temple of Advaita Acharya which is close to where is the Bayan Kutir of Krishnadas Kaviraj Goswami. तो परसों अद्वैत आचार्य जी का जो है अपीयरेंस डे यूसे राइट तो उनका आविर्भाव दिवस है और उस मंदिर के कुछ दूरी पर ही अद्वैत आचार्य जी की समाधि है और वहां पे कृष्णदास जी की भजन कुटीर है. कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की. So they couldn't go and they say, okay, you can go. I had a friend of mine who was a congregational member from England. He was, I don't remember if he was initiated at the time or not, but he's been in Krishna consciousness not for so long. So we went together. तो मैं और मेरा मित्र साथ में थे. जो मेरा मित्र है वो सामूहिक सदस्य है, सामूहिक जप के जो सदस्य हैं, तो वो नहीं चल पाए मेरे साथ तो मुझे जाना पड़ा उधर अकेले. So when we arrived there was nothing happening. There was a lot of people, local bridge buses from Radhakund. They were making arrangements, running here and there, and we're just waiting for see what was going to happen. If there wasn't a big celebration, there was only one ISKCON devotee. It was just like locals. तो मैं वो पंडे नहीं चले थे. मैं और मेरा मित्र वहां गए और वहां पे मैंने देखा जो वहां के व्रजवासी थे वो बड़ी तैयारी कर रहे थे अच्छे से हम लोग का सत्कार करने के लिए और अलग-अलग तरीके से वो बड़े बिजी थे. But there was like a band there with different musical instruments, and all of a sudden they started the Abhishek by blowing the conch. और वो अलग-अलग तैयारी करके वहां पे कुछ यंत्र गान बान के बजाने के सब कुछ तैयारी करके और शंख नाद सब तैयारी करके बैठे थे. And as soon as the conch blow and they started with the cymbals and all making a tumultuous sound, it was like Krishna just lifted the curtain of Maya and we were just in a different space altogether. I remember my hairs were standing on end and I looked to my friend and I said, are you feeling the same thing? He said, yeah, my hair's standing on end, both of us. और जैसे ही शंखनाद हुआ और ये जो यंत्र वादन हुआ ये सुन के ये आवाज ऐसा मधुर इतनी दिव्य थी कि आवाज सुनते ही जो माया का जो पर्दा था वो हमारे सामने से हट गया और मुझे स्मरण है कि मेरे बालों के हाथ खड़े हो गए. मैंने यही बात मेरे मित्र से पूछी क्या आपके साथ भी यही हो रहा है तो उन्होंने कहा हाँ मेरे भी बाल खड़े हो रहे हैं हाथ. We were both we were having a spiritual experience. Sometimes we have a spiritual experience, but usually it's on your own and you're never too sure if it's just you're becoming emotional or something. But in this case it was just two of us. We were both feeling the same. तो ये जो था आध्यात्मिक अनुभव था और ये आध्यात्मिक अनुभव वैसे तो हमारा अकेले में होता है परंतु उस समय इस दिव्य दृष्टांत को देख के हम दोनों को ये आध्यात्मिक अनुभव हो रहा था. So we were exposed to an atmosphere full of devotion. और हम ऐसे वातावरण की तरफ खुल चुके थे जो पूरा भक्तिमय था. And this is actually the ultimate goal. That's where we want to be all the time. और यही
असली जो भक्ति का मतलब है और यही हमको प्राप्त करना है अपने जीवन में, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। Sometimes Krishna gives us a little taste, a little glimpse, a little drop of that nectar so that we become inspired in Krishna consciousness. कभी कभी कृष्णा हमें थोड़ा सा इसके बारे में स्वाद देते हैं ताकि इस स्वाद को देखकर चखकर हम लोग कृष्णा के लिए और आकर्षित हों। So here the picture is being described that Krishna and Balaram themselves, they are walking through the main road in Mathura, and now the ladies of Mathura, they are praising the gopis in the verse that we stopped today. तो ये जो दृष्टांत बताया गया इन श्लोकों में, ये बताया गया है कृष्ण और बलराम इसी प्रकार से उस मथुरा के जो मेन रोड थे, जो रास्ते थे, बड़े रास्ते थे, उस रास्ते से वो जा रहे थे और जो गोपियां थी वो देख के दृष्टांत, और इसके बारे में अभी आगे इससे चर्चा होगी। And they are praising the gopis because they're saying, what kind of austerities must they have performed? They are actually able to see Krishna and Balaram all the time. और वो कृष्ण का गुणगान कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि किस प्रकार से क्या उन्होंने ऐसे सत्कर्म किए रहेंगे, जो उनको पुण्य कर्म किए रहेंगे, जो कृष्णा के बलराम के गुणगान करने का उनको ये सौभाग्य हुआ है। And so what is the special position of the gopis that they are able to have the full manifestation of Krishna, the full intimacy of a loving relationship with Krishna? What is it that, you know, they have done to achieve that? तो ऐसा क्या उन गोपियों ने किया था जिसके कारण कृष्णा अपना पूर्ण उनको सर्वस्व दर्शा रहे थे और अपनी कृपा दे रहे थे उन गोपियों के ऊपर? So I like to elaborate on this a little because, you know, Krishna has just left Vrindavan and is coming into Mathura. And there is actually like a hierarchy of spiritual places. And we know that the topmost realm is Sri Vrindavan. तो इस बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि कृष्णा वृंदावन छोड़ के मथुरा में आ रहे थे, और ऐसा बताया जाता है कि अलग अलग स्तर से सब धामों को बताया गया है। तो वृंदावन सबसे ऊपर स्तर पे आता है और ये जो है श्रेणी है इस प्रकार से। And as described by Srila Rupa Goswami in the Upadeshamrita, within Vrindavan you have Govardhan and then Radhakund. और ऐसा बताया गया है श्रील रूप गोस्वामी द्वारा कि वृंदावन में है जो गोवर्धन है, और गोवर्धन में प्रभु यू सेड राधा कुंड, राइट? Yeah. तो गोवर्धन में जो वो राधा कुंड उससे भी ऊपर है। So the Lord manifests himself or reveals himself in full in Sri Vrindavan Dham. तो जो निचले स्तर पे होते हैं वो भी अपना सर्वस्व दर्शाते हैं, दिखाते हैं वृंदावन धाम में। And it is said that the Lord never leaves Vrindavan. Yet we are hearing here that he is entering Mathura. So how is it that he never leaves Vrindavan? तो ऐसा बोला गया है कि भगवान वृंदावन कभी नहीं छोड़ते, पर अभी हम देख रहे हैं कि भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे, कैसे हो गया ये? So Krishna in his full manifestation never leaves Vrindavan. तो कृष्णा अपने पूर्ण दर्शन में वो कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते हैं। As soon as he steps out of Vrindavan, then he becomes Vasudev Krishna. और जैसे ही वो वृंदावन छोड़ते हैं तो वो वासुदेव कृष्ण के दर्शाते हैं, अभिव्यक्ति दिखाते हैं। So the Lord, from that perspective, the Lord never leaves Vrindavan. He always resides there in his aprakat form, in his unmanifested form. तो इस प्रकार से भगवान वृंदावन कभी नहीं छोड़ते हैं, वो अपने अप्रकट लीला दिखाते हैं
इस प्रकार से वो रहते हैं वृंदावन धाम में। But he himself, as Swayam Bhagavan, as the complete expression of divinity, he never steps out of Vrindavan. Why? Because of the love of the residents of Vrindavan. Special type of love. And they are Braj Bhaktas. और वो स्वयं ये वृंदावन कभी नहीं छोड़ते, स्वयं भगवान होने के कारण क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो अपना जो प्रेम है वृंदावन वासियों के प्रति, उस प्रेम के कारण वो कभी उस वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं। और ये जो प्रेम है वो बड़ा स्पेशल है। And what is that special love? That love of the residents of Vrindavan is completely pure. It's not like tainted with any kind of trace of anything but pure, selfless love for the Lord. तो ये जो विशेष प्रेम है भगवान के प्रति, ये निस्वार्थ प्रेम है, इसमें कुछ भी मिश्रण नहीं है, शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति ब्रजवासियों के लिए, ब्रजवासियों द्वारा। So this is the idea. The idea is that in Vrindavan, when we're talking that Krishna is his full manifestation is there, Krishna in Vrindavan is just himself. तो ये विचार है कि कृष्णा अपने पूर्ण अभिव्यक्ति में वो वृंदावन में पूर्ण अभिव्यक्ति दिखाते हैं। As soon as he comes out of Vrindavan, he now the residents of Mathura they have a more reverential mood towards the Lord. They know Krishna is God, and they have a little kind of reservation because of the Lord's position. जैसे ही भगवान वृंदावन छोड़ते हैं तो वहां पे मथुरा में और दूसरी जगहों पे भगवान को मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है ये स्वयं भगवान है, तो उस प्रकार से उनको मान सम्मान दिया जाता है। But when someone takes a position, it limits its revelation, his revelation to the people. For example, Prabhupada will use the example of the high court judge, or take another example, like the king. Okay, when the king is in the court with all his ministers and all his rulers, he is not manifesting himself in full. तो प्रभुपाद एक उदाहरण हमें बताते हैं, वो हाई कोर्ट जज के बारे में, या तो आप एक राजा का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पे वो अपने मिनिस्टरों के साथ या जो उनके मंत्री पार्षद और उनके जो सदस्य हैं उनके समक्ष वो पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं दिखाते हैं जो राजा होते हैं। He is the king. He has to keep certain profile, and those who are interacting with him, they're also interacting with the king, some respect, some awe and veneration. तो वो राजा है, वो राजा अपनी श्रेणी दर्शाने के लिए उस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, कुछ व्यक्ति उनसे उस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, तो उनको अपनी श्रेणी बनाए रखनी है कि कैसे वो राजा है। Now when the king goes home, go to his palace and is with his intimate friends and relatives, he is no longer respected as he is with his ministers. वो ही राजा अपने जो पैलेस में, अपने जो महल में जाता है, तो उसके जो रिश्तेदार हैं, जो उससे बहुत गुह्य संबंधित व्यक्ति है, उसको वो सम्मान और मान उधर घर पे नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो उनसे संबंधित है और उनसे मिले हुए हैं। When he is in his inner quarters, he is just being himself, and those who are with him love him for whom he is, not for his position. जैसे ही वो अपने रूम में आते हैं और वहां पे जो व्यक्ति है वो उनको राजा की तरह नहीं, वो उनसे प्रेम करते हैं और उस प्रकार से वो उनसे संबंध का आदान प्रदान करते हैं, ना कि वो सोचते हैं कि ये राजा है इसलिए हमको जो मान सम्मान देना पड़ेगा, परंतु जो प्रेम है उस प्रकार से वो आदान प्रदान करते हैं उस रूम में। The position is not the full manifestation of the person.
तो जो श्रेणी है वो उसके व्यक्ति के जो कार्य है उससे नहीं दर्शाए जाते हैं। So who is God when he gives us his position as God, when he gives up his godhood? तो जो भगवान है, भगवान का जो पद है वो कैसे समझ में आएगा, वो अब समझिए। He is Krishna in Vrindavan, a cowherd boy, just a simple cowherd boy, and he's playing with his friends, and he's playing games, and sometimes he loses the game, and sometimes he has to carry another gopa on his shoulders. Sometimes Mother Yashoda is threatening him with a stick, and he looks afraid. And everybody loves him just because he's the most adorable personality that exists. तो ये कृष्णा है, ये कृष्णा वृंदावन के हैं। तो वृंदावन में वो कभी अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, कभी मित्रों के साथ वो हारते हैं, अपने मित्रों को कंधे पे उठा के वो उनकी सजा काटते हैं, कभी माता यशोदा से डरते हैं। इस प्रकार से वो अपने जो प्रेम का है आदान प्रदान एक ग्वाल बाल की तरह कर रहे हैं। भगवान होने के बाद भी वो बाल अपनी बाल लीलाओं वृंदावन वासियों से कर रहे हैं बहुत मधुर तरीके से। He doesn't need to cover his godhood, his being God. Sorry, he doesn't, he has to cover his divinity in one sense, so that, the residents of Vrindavan, they can just love him from whom he is. वो अपनी दिव्यता छुपाए हुए है ताकि जो व्रजवासी है वो उनको भगवान समझ के नहीं एक अपना ही जैसे समझ के प्रेम का आदान प्रदान कर सके। इसलिए And interestingly enough, that allows the full revelation of himself. Can you, sorry Prabhuji, I missed the first point. The fact that he covers his divinity, covers his position as God, enables him to fully manifest himself as Krishna, Braja Krishna, Yashodanandan. तो इस प्रकार से जब वो अपनी दिव्यता छुपाए हुए हैं तो इस प्रकार से वो अपनी अभिव्यक्ति पूर्ण तरीके से दर्शा रहे हैं क्योंकि वो कृष्णा है, ब्रजवासी कृष्णा। And that's the special feature of Vrindavan Dham. और ये विशेषता है वृंदावन धाम की। And that, full revelation of the Lord only takes place in Vrindavan. और भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति जो है वो सिर्फ वृंदावन में ही दिखाई गई है। That intimacy of love is only full manifested in Vrindavan. As soon as even he steps out in Mathura, it's not full. और ये जो भगवान का जो अभिव्यक्ति है, रहस्य उद्घाटन है, वो सिर्फ वृंदावन में ही दर्शाई जाती है। जैसे ही वो वृंदावन से बाहर जाते हैं वो उस प्रकार से नहीं दर्शाई जाती है जैसे वो ब्रजधाम में दिखाई जाती है। But we're hearing in Mathura also the pure love of the devotees. They run towards seeing the Lord like with such eagerness. They drop everything to see the Lord. और हम देख रहे हैं कि मथुरा में भी ऐसे ही शुद्ध भक्त हैं जो भगवान को देखने के लिए तत्पर हैं और वो सब कुछ छोड़ के भगवान के दर्शन मात्र के लिए भाग रहे हैं। At the same time, they are praising the love of the gopis. Why? Because the Lord, puts their arm on their shoulders. He dances with them. और उसी समय वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं और गोपियों का गुणगान कर रहे हैं क्योंकि भगवान जो है गोपियों के कंधों पे हाथ रख रहे हैं, उनके साथ नाचते हैं और इस प्रकार से मथुरावासी वो गोपियों का गुणगान कर रहे हैं। So what kind of activities, what did they do? It is described in the Chaitanya Charitamrita. We hear the discussion between Lord Chaitanya and Venkatavata. तो ऐसा क्या उन्होंने किया है गोपियों ने, इस बारे में चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु, in which place you said Prabhu? Chaitanya Charitamrita. No, Lord, in Katha, what? Lord Chaitanya had a discussion with Venkatavata.
वेंकट भट्टा, ओके। तो ये जो चर्चा चैतन्य चरितमृत में भगवान की जो चर्चा है वेंकट भट्टा के द्वारा हुई गई है, उसके बारे में बताया गया है। And there is how is that Lakshmi Devi, had to perform so many austerities. He performed so many austerities so she could enter into these most intimate pastimes between the Lord and the gopis. तो ऐसा बताया गया है कि लक्ष्मी देवी को बहुत तपस्या करनी पड़ी ताकि वो भगवान की ऐसे दिव्य लीलाओं में आ सके, And still she could not enter. और उसके बावजूद भी वो देवी लक्ष्मी नहीं आ सकी उन लीलाओं में, Because she could not give up her position of, as being Lakshmi Devi. क्योंकि वो अपना ऐश्वर्य भाव नहीं त्याग सकी, क्योंकि वो लक्ष्मी देवी है, And just become a simple Kahir girl, village girl. और वो एक गोपी नहीं बन पाई इस प्रकार से, इसलिए वो उस लीला में आ नहीं सकी। The ladies in Mathura, they are now like city girls. और जो मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो एक शहर की स्त्रियों की तरह है। It's a different environment, it's a different mood than just a simple village life of Vrindavan. तो ये अलग वातावरण है मथुरा का, वो अलग भाव है मथुरा का, और ये जो गोपियों का भाव है वो एक सरल स्वभाव है उनका, एक गांव की भांति में जो सरल जीवन है उस प्रकार का भाव है गोपियों का। So even Lakshmi Devi, she couldn't enter. So what is and by performing so many austerities, so what is the exalted position of the gopis? They can have this intimate relationship with the Lord. तो लक्ष्मी देवी भी ऐसी लीला में आ नहीं सकी इतनी तपस्या के बावजूद भी। तो देखिए क्या उन गोपियों का स्तर है कि भगवान उनको ऐसी विशेष कृपा दे रहे हैं। And this is actually what Lord Chaitanya came to give us. He wanted to experience that same love, and he came to he wanted to express it, to experience it himself, and he wanted to give it to us. और यही प्रेम भगवान चैतन्य हमको देने के लिए आए हैं ताकि हम इसका अनुभव कर सके, और स्वयं वो भी अनुभव करना चाहते थे जो गोपियों का प्रेम था भगवान के प्रति। And it's a love where the residents of Vrindavan, they're not worried about, should I say like this, should I do this, should I do this, something. They're not like worrying about anything. Everything that they do is spontaneously directed towards pleasing the Lord. Everything is orchestrated, is directed to give Krishna pleasure. तो जो भी ब्रजवासी गोपियां कर रही थी वो ऐसा नहीं था कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये करना है, इस प्रकार से वो नहीं सोचती थी। वो तत्क्षण उसी समय वो आ जाता था उनके स्वभाव से, उनके प्रेम द्वारा वो उसी समय वो उस प्रकार से कार्य, वो कुछ इसके बारे में प्लान नहीं करते थे। So it's a very, and Krishna is, they're fully dependent on Krishna. The whole lives is centered around the Lord. तो वो कृष्णा को ही अपना केंद्र, अपना पूर्ण जीवन कृष्णा को ही केंद्र बनाए रखे हुए थे गोपियों ने। So now to attain this position, this is very, very high. I'm even speaking these things, and this is really, really high things. तो ये श्रेणी प्राप्त करना सबसे उत्तम स्तर का है। मैं ये बात के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, परंतु ये बहुत उत्तम स्तर की बातें हैं। Very high topics, and generally for those of us who don't have that natural spontaneous attraction for the Lord, we first of all we need to understand the greatness of God, and that gives us impetus to actually serve the Lord. और ये इतने उत्तम श्रेणी की बातें हैं, ये हम लोग इस प्रकार से नहीं समझ सकते। पहले भगवान की जो महानता है उसको समझना है, उसके बाद ही हम समझ सकेंगे कि भगवान के ये जो लीला है। That the Lord is the creator, the controller, but actually for the residents of Vrindavan, this is not important at all. They just love Krishna
because whom he is, because of his personality, not because of his position. तो हमें उनकी महानता, उनकी नियंत्रता का समझना है और इस प्रकार से हम भगवान के प्रेम को समझ सकते हैं। परंतु गोपियों के लिए इस प्रकार से नहीं था। गोपियां उनको एक भगवान की भांति नहीं, एक व्रजवासी कृष्णा के भांति ही प्रेम कर रहे हैं। और ये जो है उनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो भगवान है, वो उसके लिए कुछ सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रेम है तत्क्षण उसी प्रकार से है। Like there is the pastime where the gopis are searching for Krishna, and then Krishna is hiding, and to hide himself, he actually displays his four-armed Vishnu form. तो ऐसी लीला है जहाँ पे गोपियां कृष्णा को खोज रही हैं और कृष्णा छुपे हुए हैं, और जब वो आते हैं तो वो चतुर्भुज रूप में आते हैं उनके समक्ष। And then when the gopis see Vishnu, they all go in a very reverential mood, and they offer obeisances, and they ask, please, if you can give us a blessing, if you can give us a boon, please let us know where is Krishna. तो जैसे ही वो विष्णु का चतुर्भुज रूप देखते हैं कृष्णा का, तो वो बोलते हैं, उनको मान सम्मान देना शुरू हो जाते हैं, और वो उनसे को बोलते हैं, हमें आशीर्वाद दे सकते हैं आप, हमें आशीर्वाद दीजिए और बताइए कहाँ है कृष्णा। They are having Vishnu, the supreme, the Lord, in front of their eyes, and they want Krishna. उनके समक्ष विष्णु है, भगवान विष्णु, और वो देखने के पश्चात भी उन्हें कृष्णा ही चाहिए है अपने जीवन में। And then Srimati Radharani came, and because of the purity of her love, then Krishna could not contain anymore his four-armed form. The two of the arms were disappearing, and Krishna just manifested himself. Why? Because of, this is like a dynamic relationship between the love of the devotee and how the Lord reciprocates with that love by revealing himself. तो जब राधा रानी वहां आती है, तो भगवान की जो अभिव्यक्ति है वो दर्शाई गई है। ये उस प्रेम के भांति दिखाया गया है कि भगवान के भक्तों के प्रेम के समक्ष भगवान अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, और उनके जो चतुर्भुज रूप था वो द्विभुज में परिणत हो गए उस समय राधा रानी को देख के। So the Lord himself, he had to manifest himself as Krishna. So now the thing here is that Krishna's beauty, he is so attractive that even Vishnu himself is attracted by Krishna's beauty. तो जो कृष्णा की अभिव्यक्ति देख के जो ये प्रेम है, प्रेम के कारण भगवान ने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की, और बताया गया है कि कृष्णा की जो सुंदरता है, ये सुंदरता स्वयं विष्णु भी आकर्षित है इनकी इस सुंदरता से। It's described that Krishna is the ornament of all ornaments, and even other forms of the Lord, not just devotees, but other forms of the Lord are attracted to him. तो ऐसा बताया गया है कि कृष्ण जो आभूषणों में भी सबसे उत्तम स्तर के आभूषण है, सिर्फ भगवान नहीं, भगवान के जो विस्तार है वो भी भगवान कृष्ण के गुणगान करते हैं। So you can just imagine the good fortune of the residents of Mathura, that they were seeing the Lord directly with their eyes, with their hearts. तो आप सोच सकते हैं मथुरा वासी जो कृष्णा को अपनी आंखों से देख रहे थे और अपने हृदय से उनको देख रहे थे, तो उनका जो आनंद किस प्रकार से होगा। Him who is the supreme controller, the fountainhead of everything. We can just even conceive, his greatness. Whenever we see anything beautiful, it's just a tiny little infinitesimal drop of his beauty. All beauty, everything beautiful that exists in the world comes from him. वो परम नियंता, परम पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी सुंदरता को हम समझ नहीं सकते हैं। वो सुंदरता बताई गई है इस भौतिक जगत में, जो भी हम सुंदरता देखते हैं, वो सुंदरता एक
एक चिंगारी मात्र है इस भौतिक जगत में भगवान के। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान की सुंदरता कितनी उत्तम श्रेणी की है। And the Lord has manifested in front of their eyes. और ये भगवान अपनी अभिव्यक्ति प्रकट किए उन मथुरावासियों के समक्ष। So I'll finish with this. Basically, how we apply this into our lives, that actually the Lord is everywhere. The Lord is present in his name. He's present. It's no different than his name. It's no different than the Bhagavatam. We're here in Srimad Bhagavatam. It's no different than the deity form. He's in our hearts. And we want the Lord to be manifested in our hearts. तो मैं पूर्ण करूंगा इस चर्चा को यहाँ पे। तो भगवान जो है वो हर जगह पे है। भगवान अपने नाम में है, वो अपने नाम से अभिन्न है। और जो श्रीमद् भागवतम की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भी भगवान है। भगवान अर्च विग्रह के रूप में है और भगवान हमारे हृदय में है। But the Lord only manifests himself through love. और जो भगवान अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं वो सिर्फ शुद्ध लव के शुद्ध प्रेम के द्वारा प्रकट करते हैं। He is interested in our love, nothing else. वो हमारे प्रेम में ही रुचि रखते हैं और कुछ भी नहीं। He is not interested in how rich we are or how talented or how whatever. He wants our love. वो हम कितने पैसे वाले हैं, कितने रईस हैं, कितने होशियार हैं, कितने बुद्धिमान हैं, ये सारी चीजों में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी सिर्फ एकमात्र रुचि है कि किस प्रकार से हमारा भगवान के प्रति प्रेम है। That's the highest thing in this world, and we also should aspire for that love. There is nothing higher than to aspire for in life than having that intimate, loving relationship with the Lord. और यही सबसे उत्तम स्तर है इस भौतिक जगत में, और हमको भी इसी उत्तम स्तर को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके, प्रेम भगवान का प्राप्त कर सके। And in order to do that, we have to follow in the footsteps of the dearmost devotees of the Lord. और अगर हमको उसको प्राप्त करना है तो हमको जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके पद चिन्हों पे हमको अनुसरण करना पड़ेगा। Who have given up everything, any selfish desires, for the sake of pleasing the Lord. जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया है, भगवान की निस्वार्थ सेवा की है और भगवान को अपना समर्पण कर दिया है। And this mood should permeate all our activities. Will the Lord be pleased by my actions? और ये भावना हमको अपने सेवा में दिखाना है और भगवान को ये खुश करने के लिए हमको करना पड़ेगा। Am I doing this for myself or am I doing it for the Lord? जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ या मैं वो अपने ही संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। Okay, time is up. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakalpasya kripa sindhuya vacha patitanam pavanevyo vaishnavevyo namo namaha. Hare Krishna. So I don't know if there is time for any questions or we finish here. तो किसी का कोई प्रश्न है या समय पूर्ण हुआ कृपया करके बताएं। Just a few minutes because today we all have a busy day with Prabhupada's celebrations. But we can answer one or two questions. Yeah. सॉरी, कुछ क्षण के लिए कुछ चर्चा कर सकते हैं क्योंकि आज बहुत बिजी दिन है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का आज है तिरुभाव दिवस है, तो हम लोग को बहुत सेवा है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने इतने पहले तो आपने इतना कीमती समय दिया हम लोगों को, और दूसरा आपने इतने अच्छे से ये जो भगवान का जो रसास्वाद है वृंदावन में और द्वारका में, उसको इतने अच्छे से आपने बताया कि द्वारका में किस तरीके से भगवान को की ऐश्वर्यपूर्ण सेवा होती है और
वृंदावन में किस तरह प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति में वृंदावन वासी लगे रहते हैं। और अभी मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो कृपया आके आप अपने माइक अनम्यूट करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। Prabhuji, he said that he thanked you because you've given your special time to us and explaining us how in Mathura there is opulent service and how in Vrindavan you very nicely explained that service is with love in different way. Thank you, he just told you. Thank you. Thank you very much. All right. So I very much appreciate your participation in the class, and I wish you a wonderful day today. Hare Krishna. We can finish here, right? तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि आपका जो सहभाग दिया इस क्लास के प्रति मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो क्या अभी हम इसको विराम दे सकते हैं? प्रभु पूछ रहे हैं। Hare Krishna, Prabhuji. We'll take few prayers and announcement, and then Okay. Yeah, Hare Krishna, Radhikanagar Prabhu, Dandavad Pranam. Dandavad. Yeah, Jai Govinda here. Wonderful class, Prabhu. Thank you very much. Thank you. Prabhu, there are no questions. Just I want you to say, just like 1 or 2 minutes. I want you to speak on Srila Prabhupada. I mean, if you have time, just a quick one. Okay. Well, obviously, we are here because of Prabhupada and because of his sacrifice. He gave his life basically for us, and he is still present in many ways in our lives, even though he's physically not present, but we can still access him through his teachings, through his books. Very much present. He was asked one time by a reporter, that what will happen when you leave, and he said, I will always live in my books, in my teachings. So I was thinking about it this morning that Prabhupada still very accessible to us, perhaps even more than ever before, because before, even when he was physically present, he was obviously traveling constantly, and some places he didn't even visit, and the books were not so available, and the classes were not so available. Now we keep them all in our mobile phones. We can read his books, we can hear his classes, his morning walks. You can actually follow the recordings of his whole life. You can follow that, and you can travel with Prabhupada through all the different places that he went, and be with Prabhupada. And so I was analyzing that, at least on my personal life, I am here definitely because of him. I mean, we are all here because of him. Is no question about it, because he established ISKCON, he established the temples, and he gave us make devotees. He gave us a lifestyle, in so many ways he's present in our lives. But what I was referring to more is that at times of difficulty, I have always felt Prabhupada's presence very strong in my life. And that's why I have that, I've been able to maintain my Krishna consciousness. He's there, and he can, manifest himself in many different ways. But the point I'm making is that if we are really trying to be Krishna conscious and trying to endeavor in Krishna consciousness with all our weaknesses and our shortcomings, he's Patita Pavan. He's the most merciful. So he will come to us when we're at the lowest point, and he will pick us up. That's Prabhupada for me. And that's what I he is our ever well-wisher. And
to be a well-wisher for anyone is not easy in this world. You have to be free from false ego. You have to be free from selfish desires. You have to have a heart which is soft like butter, that Krishna is residing there. And Prabhupada exemplified that. And that's why he was a magnet for so many devotees. And devotees were ready to give their lives, and they had not had any exchange with him, yet maybe just a look in their eyes. But Prabhupada had that love, that pure love. And that's again, I was mentioning at the beginning of the class that we want to enter that spiritual atmosphere. And we can enter that spiritual atmosphere by being at Prabhupada's lotus feet. I'll just tell you a quick, I mean, I have so many stories. They're very personal, and I don't generally like to share them so much, but in public, but I can tell you one which is, is just a simple thing. But I remember my first visit to Bhaktivedanta Manor. I was still, not following the principles. I was long hair. I was not, I was like a friend of Krishna, you could say. In the sense, I wasn't practicing. And so I remember I went to Prabhupada's rooms, and it was so peaceful there. I entered, and literally my mind stopped. Like Shanti, Shanti, and it was like incredible. I never experienced anything like that. So I was in the rooms, and I was step out to see the difference, And it was a difference. And then I stepped back in, and again. And I remember at that point, I thought, I don't want to be anywhere else. I just want to remain here forever, for eternity. Prabhupada's lotus feet. Prabhupada's rooms at the Bhaktivedanta Manor, they have a murti of Prabhupada. Prabhupada spent considerable time there when he was in the West. And he's very present there. And then, that's been an impetus for me to go into Prabhupada's teachings and really make that a goal, to be, every day somehow absorbed in hearing and chanting and keeping that atmosphere. And the one last thing I would like to say, that Prabhupada, he maintained that same spirit. He did exactly what, he did what we are supposed to do. He himself was absorbed in the Srimad Bhagavatam right until the end of his life through his translations, and the devotees were also reading Bhagavatam to him. So, and that was the weapon he brought. He brought the holy name, and he brought the Bhagavatam for us. So if we want to be in that same, spiritual, blissful consciousness, we have to establish a very solid relationship with Srila Prabhupada through hearing and through his, Vani. And when Prabhupada informed Bhakticharu Swami that he was going to leave this world, where they were in Rishikesh, and he says, take me to Vrindavan, my time is come. And Prabhupada said, his departure must be glorious. And he showed that perfect example right until the end. He was, in a very, very debilitated condition. The doctor said that anyone in that condition will be in agony, screaming in pain. And Prabhupada didn't show any signs of complaining. He was just, his mind was absolutely crystal clear, focused on the Lord. He could fix his mind in such a kind of difficult situation. That's bhakti, that's devotion. And this is what and that was his glorious departure, right until the end, translating Srimad Bhagavatam, putting aside all his personal needs for the sake of helping others and for the sake of pleasing the Lord by preaching his glories.
So today is a very important day where we can actually absorb our minds in hearing the glorifications of the devotees of Srila Prabhupada and renew or reinforce our commitment for the coming year. Days like today is a day also for self-reflection and see actually how am I doing in my Krishna consciousness and what can I improve for the coming year so that I can please Srila Prabhupada, whom we owe him everything. If we look into our lives, every aspect of our life is affected by Prabhupada in a positive way. Srila Prabhupada ki jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Okay, I'm sorry if I went for a little too long for that, but hope it's okay. Thank you so much, everybody. Anything else I can do? Can I translate, Prabhuji? Oh. No, my we will God. not hold Prabhu. Prabhu has got commitments, so you can translate it. Prabhu, if you can stay back, you are welcome, or else Yeah, you can I'm leave. gonna departure. I'm sorry I forgot about the Hindi translation. My apologies to the Hindi speakers. Really apologize for that. You should have stopped me and let me know. I just kind of forgot. I have noted points, Prabhu. I will try to serve with Okay. your mercy. So I'm gonna go myself. Thank you very much, everybody. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. His Grace Radhika Nagar Prabhu ki jai. Thank you, Prabhu. Wonderful, amazing. Hi, Krishna. Yeah. Thank you. Haribol. Prabhuji, I have one question. Is it okay? Okay, Sorry. quickly, yeah. Yeah. If it's not like a really Yeah, long. Prabhuji. Yeah. Thank you so much, Prabhuji, for such an amazing class today. Prabhuji, I just wanted to know about that Mathura Vasi knows that Krishna is in Vrindavan and he will definitely come back to Mathura once. I didn't I don't know understand. how I didn't understand. understand. I didn't understand the Yeah. question. He's asking Mathura Vasis knows that from before only that he is going to leave Vrindavan and Krishna is going to come to us. Yeah, They were aware. They knew they were expecting him. They were expecting him. Okay. Yeah. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. And I would say, Tomasi. we were discussing about the different reasons why the Krishna never leaves Vrindavan. Another reason is that Krishna always comes back to Vrindavan. I just came, as you were saying about coming back to Mathura, I was saying, well, actually, he will always come back to Vrindavan. Okay, Hare Krishna. Thank you very much. Haribol.